सारे आ गए बहन भाई, सारे अटेंडेंस कंप्लीट? ओम शांति। यस, गुड ओम शांति। गुड। मेरे को स्क्रीन शेयर मिल जाए तो मैं करता ओम हूँ। शांति। को होस्ट तो बन गए सर आप? ओके। ये ओम शांति सर, हमें लास्ट में ये बताइएगा पेपर स्टाइल मतलब कितने क्वेश्चंस रहते हैं, कितने मार्क्स के, वो आप थोड़ा बताएंगे हमें लास्ट में? जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, तो ये स्क्रीन शेयर हो गया, अभी शुरू करें? हाँ जी, करिए। ओके। हाँ जी। तो कल हमने सैम्पलिंग वगैरह पढ़ा था और कैसे डाटा कलेक्शन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं। इसके बारे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हमने शुरू शुरू में बताया था मैंने कि प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है। तो आज इसी के बारे में करेंगे। प्राइमरी डाटा इज कलेक्टिंग डाटा डायरेक्टली फ्रॉम ओरिजिनल सोर्सेस। आप किसी से बात करके टेलीफोन पे क्वेश्चनर मेथड से या इंटरव्यू करके किसी भी तरीके से डायरेक्ट जिससे डाटा लेना है उससे बात करके जब डाटा लेते हैं तो उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ डाटा डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्टिव्स, नेचर ऑफ डाटा, रिसोर्सेज क्या है। ये मेथड हम अभी पढ़ेंगे इनके बारे में कि कैसे प्राइमरी डाटा लेते हैं। फर्क याद रखिएगा, डिफरेंस इज प्राइमरी डाटा यू आर टेकिंग इट डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स, इट इज ओरिजिनल डाटा, इट इज न्यू डाटा। सेकेंडरी डाटा इज व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो कई लोगों ने रिसर्च कर ली है, आप उसमें से कुछ डाटा निकालते हो तो उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो what are the methods of primary data collection? सबसे पहला है सर्वेज। जो सर्वेज है इसमें होता है, इसके दो हिस्से हैं, क्वेश्चनर्स एंड इंटरव्यूज। क्वेश्चनर्स में डिजाइन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर विद ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस टू कलेक्ट डाटा। आप पहले ही अपने घर में बैठ के क्वेश्चनर बना लेते हो, उसका जवाब के लिए आप लोगों के पास जाकर डाटा कलेक्ट करते हो। क्वेश्चनर्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन पर्सन, ऑनलाइन, बाय पोस्ट और फोन, ईमेल, जैसे भी आप चाहें क्वेश्चनर एडमिनिस्टर कर सकते हो। आपको डायरेक्ट सोर्स से लोगों से डाटा मिलेगा। क्वेश्चनर कैसे होते हैं ये भी आगे पढ़ेंगे। सेकंड इज इंटरव्यू। इंटरव्यू कंडक्ट फेस टू फेस, टेलीफोन और वीडियो इंटरव्यूज। इंटरव्यूज कैन बी स्ट्रक्चर्ड, फिक्स्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ओपन एंडेड। फिक्स्ड का मतलब है यस नो में आंसर ले लेना, और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है इट इज ओपन एंडेड। आप उज्ज्वला स्कीम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, सो दिस इज ओपन एंडेड, कोई कुछ भी बोल सकता है। सो ऐसे करके इंटरव्यू दो तरह का हो जाता है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या है? ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इन नेचुरल सेटिंग। नेचुरली जो लोग जिस हालात में रह रहे हैं, जैसे भी है, आप जाके कोई इंटरवेंशन नहीं, कोई वेरिएबल नहीं, कुछ नहीं, आप खाली उनको ऑब्जर्व करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। It is very common in anthropology and psychology. What is anthropology? It is anthropology जो है वो है study of human beings and their ancestors through time and space in relation to physical character, environmental, social relations and culture, traditions, etc. So study of human beings and their ancestors through time and space, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और ये एक और होता है थियोलॉजी। थियोलॉजी इज डीलिंग विद ओरिजिन, नेचर एंड डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज डिफरेंट। सो एंथ्रोपोलॉजी
और साइकोलॉजी जैसी स्टडीज में हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मीन रिसर्चर्स इमर्स देमसेल्व्स इन द एनवायरनमेंट टू बी स्टडीड. रिसर्चर खुद उसमें पार्टिसिपेट करता है, उस कल्चर को, ट्रेडिशन को, चीजों को देखता है, सीखता है, करता है, और फिर उसको ऊपर वो अपनी रिपोर्ट बनाता है. तो इसमें खुद पार्टिसिपेंट भी कर सकता है. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंटल में होता है जनरली लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू मैनिपुलेट वेरिएबल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. फील्ड एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, जैसे कि आप खेतों में जाके कर सकते हैं, लोगों के पास जाकर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप बना के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो आपके फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में आ जाता है. Focus groups, a small group is brought together to discuss specific issues. छोटा ग्रुप 8-10 लोगों का बना के आप फोकस करते हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर और उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हो. Particularly useful in qualitative research and market research to understand opinions and attitude. ये पायलट स्टडी में भी बहुत यूजफुल होता है फोकस रिसर्च. Next is diaries and journals. Diaries and journals are written electronic records of thoughts, experiences, etc. To etc. Is kept by participant over a specified period. लोगों ने जो कईयों ने रिसर्च की हुई है पहले से, उसके बारे में आप डायरीज एंड जर्नल जो पहले ही लोगों ने रिसर्च कर ली है, अपने थॉट्स, एक्सपीरियंसेस कर चुके हैं और वो लिखे हुए हैं. डायरी से आप जर्नल जो आर्टिकल वगैरह लिखे जाते हैं, बुक्स लिखे जाते हैं, उनको पढ़ते हैं. यूजफुल फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज. लॉन्गिट्यूडनल मीन्स अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग एरा में पढ़ना चाहते हैं. आज से 20 साल पहले क्या हुआ, 15 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, टाइम पीरियड में, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में ये ज्यादा काम आता है. Case study collect detailed information about a single case or smaller number of cases. Single case or smaller एक ग्रुप ऑफ केसेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़ते हैं तो आप उसको केस स्टडी कहते हैं. इसका मैंने कई बार उदाहरण दिया है. धीरू भाई अंबानी 500 रुपए लेके आए बॉम्बे, हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया. केस स्टडी. कई इंडस्ट्रीज हैं बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती हैं. केस स्टडी. कई हैं जो फेल हो जाते हैं. दैट इज ऑल्सो ए केस स्टडी. व्हाई डिड ही फेल. कॉमन इन सोशल साइंसेज एंड साइकोलॉजी में आम पढ़ाया जाता है. कंटेंट एनालिसिस. Existing textual or visual material such as documents, newspapers, social media, posts, videos to extract and interpret data. Existing text, books, visual material, documents, newspapers, websites, social media posts, videos, जहां से भी आपको मिल जाए, जो ऑलरेडी अवेलेबल कंटेंट्स हैं, उनके ऊपर आप स्टडी करते हो. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्राइमरी डेटा कलेक्शन. Then is photography and videography, using cameras or videos, cameras to capture visual data and imagery to support finding. आप अपने ही खुद ही कैमरा यूज करते हो, वीडियो यूज करते हो टू कैप्चर विजुअल डाटा एंड इमेजरी टू सपोर्ट फाइंडिंग. सेंसर डाटा. In environment science and health, data from instruments and sensors is collected. अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, सेंसर से डाटा लेते हैं. वेदर रिपोर्ट, सेंसर से डाटा लेते हैं. दैट इज ऑल पार्ट ऑफ सेंसर डाटा. देन इज एथनोग्राफी. व्हाट इज एथनोग्राफी? Ethnography is that the ethnographers immerse in a particular culture, community to observe, participate, and understand the practices and behavior of its members. एथनोग्राफी में जो पार्टिसिपेंट, जो खुद रिसर्चर्स होते हैं, खुद इमर्स हो जाते हैं, खुद ही दे बिकम पार्ट ऑफ दैट एंड पार्ट ऑफ द ग्रुप. They learn from that community by living there, by going through their habit, their culture, their tradition, and then write your report. Projective technique, word association tests, sentence completion tests, and thematic appreciation tests used to understand thoughts, feelings, and attitudes of participants. Word association क्या है? Word दिए जाते हैं, उनके ऊपर sentence लिखो. Failure, father,
स्कूल, बुक, ऐसे वर्ड पे सेंटेंस लिखो। सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह दिए जाते हैं, उनके ऊपर लिखना पड़ता है, फिलिंग द ब्लैंक्स करने पड़ते हैं। थीमेटिक एप्लीकेशन, कोई पिक्चर दिखा दी जाती है और उसके ऊपर बोलते हैं कि स्टोरी लिखो। तो ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, इसको यूज करके उस इंडिविजुअल या ग्रुप्स के एटीट्यूड और फीलिंग के बारे में जाता है। दिस प्रोजेक्टिव टेक्निक इज एक्चुअली वेरी कॉमन इन SSB selection in defense forces. When the officer selection takes place, 4 psychological tests are conducted. They are all projective technique. Next is cognitive interviews to assess the thought process and cognitive reasoning of respondents. दिमाग उनका कितना चलता है, क्या सोच रहे हैं और क्या चला रहे हैं. Participants are asked to verbalize their thoughts as they respond to question or complete task. Participants को कहा जाता है कि जो भी आपके thoughts हैं, उनको आप question respond to a particular question and complete your task. Elicitation technique. Elicitation क्या है? Participants organize topics into categories, अलग अलग कैटेगरीज में. सो डेटा ऑन पीपल्स नॉलेज और परसेप्शन, आर सॉर्टिंग, कंसेप्ट मैपिंग, थिंक अलाउड प्रोटोकॉल. तो कार्ड मैपिंग क्या हो जाता है? पार्टिसिपेंट्स ऑर्गेनाइज टॉपिक्स इनटू कैटेगरीज as that makes sense to them. They may label them also. And concept making क्या है? A diagram, graphical tool that visually represents the relationship between concepts and ideas. Physiological measurements. Physiological measurements क्या है? Instruments used for the purpose such as heart rate, brain activity पढ़ने के लिए physiological instruments use होते हैं. Mobile apps and online platform data can be collected through apps, online surveys. These are popular methods for their convenience and reach. Next is observation method. किसी का माइक ऑन है, डिस्टर्बेंस आ रहा है. Observation method in primary data collection. So, key characteristics of observational method are naturalistic setting. What is a naturalistic setting? It is typically conducted in natural environment, as the name suggests. Naturalistic, natural environment में जो हो रहा है, आप अपनी तरफ से कोई interfere नहीं करते, आप उसको study करते हो. Behavior or phenomena occurs without intervention or artificial manipulation. दूसरा है सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस. ये भी की कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जर्वेशन का, सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू कलेक्ट डाटा. पहले से प्री प्लान्ड है आपका डिजाइन, उसके हिसाब से ही आप ऑब्जर्वेशन करते हो और अपने जो क्वेश्चन है व्हाट यू वांट टू आंसर, यू ऑलरेडी हैव मेड द क्वेश्चन, यू जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, रिकॉर्ड द डाटा. Use predefined criteria or checklists to categorize and record observation. Non-participation. Observers play a neutral and non-participatory role in most cases. वो चुपचाप खड़े रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और नोट करते रहते हैं. Objective and unobtrusive. Being objective and unobtrusive leads to reduce the risk of altering the behavior being studied. Just 1 second. Then is record keeping. The key characteristics, another one is keep the record proper. Description of behavior, timing, sequences, कैसे रिकॉर्ड किया, ये पूरा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा. Steps in collection of primary data. Observation method. So what are the steps? First is defining the objective. ये स्टेप्स ध्यान से पढ़िए, याद रखिए, बहुत अच्छा सीक्वेंस है ये आपको हर क्वेश्चन में किसी जगह भी डाटा लेना है, जो आपके काम आएगा. डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव. Anywhere you want to collect data, any kind of method you use, whether observation or interview or anything, these are the common steps. Define the objective, clearly define what is your objective, what are you going to observe, what are you want to learn from observations. Second is selection of observation setting. Choose the setting carefully
so that it reflects the natural context of the subject's behavior. जो आप पढ़ना चाहते हो उसका नेचुरल कंटेक्स्ट क्या है, हाउ आर दे लिविंग, व्हाट इज देयर कल्चर, व्हाट आर देयर ट्रेडिशन, व्हाटएवर यू वांट टू लर्न, वो नेचुरल सेटिंग में होना चाहिए। उनको पता नहीं होना चाहिए कि आप उनको चेक कर रहे हो। सिलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्टर्स, डाटा कलेक्टर्स शुड बी ट्रेन। आप किसको भेजते हो डाटा कलेक्शन करने के लिए, वो आपके ऑब्जेक्टिव से ट्रेन। हेलो हेलो या सो जो भी आदमी जाते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, अगर आप खुद जाते हो या किसी को भेजते हो, तो वो उनके दिमाग में भी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, और क्या डाटा लेना है, कैसे लेना है, इसके लिए उनकी ट्रेनिंग सही होनी चाहिए, अदरवाइज यू मे फाइंड डाटा इज बायस्ड। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टूल्स। Observation tools to include checklists, coding sheets, a structured form help to standardize the collection process. Observation tool बड़े clear होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप data कलेक्ट कर लेंगे, how to put it into computer, how to put it into the what you call it, software, how to carry out analysis, ये मुश्किल हो जाएगी। तो टूल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि डायरेक्ट डाटा आप सॉफ्टवेयर में डाल सकें। पायलटिंग, पायलट टेस्ट द ऑब्जर्वेशन टूल। जो भी टेस्ट आप मेथड यूज करना चाहते हैं, उसका पहले एक छोटा सा 5-7 लोगों के साथ पायलट टेस्ट कर लीजिए, सो दैट एनी इश्यूज रिलेटेड टू क्लैरिटी, फिजिबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी, एनीथिंग दैट कैन बी सॉर्टेड आउट एट दैट लेवल ओनली। Then you go for data collection. Conduct observations as per predetermined criteria. जैसे आपने पहले से सोचा है कि कैसे लेना है, क्या डिजाइन होगा, उसके हिसाब से आप ऑब्जर्व कीजिए। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंटली एंड सिस्टमेटिकली। जो आपने टूल सेलेक्ट किया उसके हिसाब से क्लियर observation record कीजिए consistently and systematically. Then you, once you have collected the data, you go for the data analysis. Analyze the data to identify patterns, behavior, trends, and relationship. It may involve coding and categorizing observed behavior and event. तो यहाँ पे आपको उसको नंबर देने हैं, स्केल देना है, कैसे करना है, क्या कोड देना है, ये इन्वॉल्व हो जाएगा। And then finally you carry out interpretation and reporting. डाटा को जो एनालाइज किया है उसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन करना है, फिर उसके ऊपर पेपर लिखना है, रिपोर्ट करना है, सो दैट इट कैन बी कम्युनिकेटेड टू द ऑडियंस। तो ये जो 8 स्टेप दिखे हैं, इन्हें को याद रखिए, बड़ा क्लियर है ये। बड़ा अगर आप ध्यान से बैठ के सोचें कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, तो ये 8 स्टेप दिमाग में आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन सेटिंग क्लियर होनी चाहिए, डाटा कलेक्टर्स कौन करेगा वो क्लियर होना चाहिए, टूल क्या है, कैसे करना है, उसका पायलट टेस्टिंग कर लीजिए, फिर डाटा कलेक्शन कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, इंटरप्रेट कर लीजिए। बड़ी सिंपल है ये 8 पॉइंट। Then is the types of observation method. What are the types? So the first is structured observations. Define specific behavior and events to observe. Define specific behavior or events to observe. क्या आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, should be very clear. Use predefined checklists or scales to record observation. Predefined आपकी checklist बनी हुई है, मैंने ये 5, 6, 10 चीजें चलनी है, इंडिविजुअल का नाम आया तो टिक करते जाइए कि हाँ ये इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, अदरवाइज आपका डाटा इनकम्प्लीट हो जाएगा। इट इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच बट मे लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी। चेकलिस्ट बना के और रिकॉर्ड करते हैं प्री डिफाइंड से, तो यू गो ओनली फॉर दैट, तो उसमें अगर कोई चेंज करना हो फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट इट इज वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव, इजी टू रिकॉर्ड एंड इजी टू interpret. Unstructured observations involve recording a wide range of behaviors, events without predefined criteria. अब एक अनस्ट्रक्चर्ड है, उसमें आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन नहीं ढूंढ रहे आप, उसमें आपको जवाब में कई और क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल एंड लेस सिस्टमेटिक। वेग चीजें आएंगी, आपको उसमें से इररिलेवेंट चीजें निकालनी पड़ेंगी, रेलेवेंट रखनी पड़ेंगी। Next is participant observations. The researcher gets involved by immersing into environment. खुद ही खुद उस कल्चर, उस ट्रेडिशन, उस कम्युनिटी में जाके बैठ जाओ, रहो वहां 1-2 साल, सीखो और फिर लिखो। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इट अलाउज इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव
but can be more subjective and time consuming. अंदर से आप खबर लेके आ रहे हो लाइक ए जासूस सिपाही की तरह, लेकिन इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव तो अच्छा मिलेगा, बट कैन बी मोर सब्जेक्टिव, क्योंकि आपका जो भी सोच है वो पहले है, उसको आप मिटा नहीं सकते. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द सिचुएशन. अप्रोच इज लेस इंट्रूसिव, नेचुरली इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा. मे है लिमिटेशन इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट. अगर आप खुद ही वहां नहीं घुस रहे उस कम्युनिटी में, तो बाहर से खाली ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसकी लिमिटेशन है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, व्हाई पर्टिकुलर कम्युनिटी पीपल आर बिहेविंग इन ए पर्टिकुलर वे, उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. देन इज इंटरव्यू मेथड, हमने किया था अभी ऑब्जर्वेशन में. इंटरव्यू मेथड क्या है? इट इज वाइडली यूज प्राइमरी डाटा कलेक्शन टेक्निक. Engage in direct communication with individuals or groups. Directly आप उनसे लेते हो. It valuable in getting in-depth qualitative data, can be structured or unstructured. ये क्वालिटेटिव डाटा में ज्यादा काम आता है. स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों हो सकते हैं, ये अभी पढ़ेंगे हम. तो जनरली इंटरव्यू में क्या है, 1-to-1 या स्मॉल ग्रुप के साथ आप इंटरव्यू लेते हो, तो वो क्वालिटेटिव हो जाता है, क्वांटिटी देना मुश्किल हो जाता है. क्वालिटेटिव क्या, आप एक प्रश्न पूछते हो, वो उसके जवाब में कई बातें और बता देता है, देन यू कैन मेक मोर क्वेश्चन देन आस्क देम. सो क्वालिटेटिव डाटा तो मिलेगा, क्वांटिटेटिव मुश्किल है. बट इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड आल्सो, अनस्ट्रक्चर्ड आल्सो. द की एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इंटरव्यू मेथड आर, फर्स्ट इज direct interaction. Interviewers interact directly with participants, ask questions and engaging in a dialogue to gain information. आप डायरेक्ट जैसे जर्नलिस्ट कर लोगों से माइक उनके मुंह में डाल के, सर आपकी पार्टी कितने वोट मिलेंगे, वो फिर बताते हैं इतने मिलेंगे, अच्छा आपको ये विश्वास क्यों है, तो उन्हीं के जवाब से आप और क्वेश्चन निकालते रहते हो और बोलते रहते हो. तो इंटरव्यूअर जो होते हैं वो डायरेक्टली उनके पार्टिसिपेंट के साथ इंटरेक्ट करके बात करते हैं. इट कैन बी ऑन टेलीफोन आल्सो, इट कैन बी वीडियोग्राफी, इट कैन बी ऑनलाइन, इट कैन बी फेस टू फेस, एनीवे. Second key characteristic is structured or unstructured interview. Structured, fixed set of questions. This is the question, answer me, that's all. And open-ended and flexible. And सेकेंड पार्ट इज इट कैन बी ओपन एंडेड एंड फ्लेक्सिबल. आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो जिसमें यस नो की तरह क्वांटिफाई नहीं होता है, फिक्स क्वेश्चन नहीं है. आप जब वो जवाब दे रहे हैं आपको, तो उसमें से आपके दिमाग में और क्वेश्चन आ जाते हैं, आप पूछते हो, तो दे आर ओपन एंडेड एंड फ्लेक्सिबल. इट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी होते हैं, बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. यू कैन हैव सम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, सम अनस्ट्रक्चर्ड, कॉम्बिनेशन. ह्यूमन इंटरेक्शन, फेस टू फेस और वर्चुअल ह्यूमन इंटरेक्शन होता है. फेस टू फेस भी होता है, वर्चुअल भी हो सकता है. दिस मेथड क्रिएट्स रेपो एंड ट्रस्ट विद पार्टिसिपेंट. फेस टू फेस करते हैं और वर्चुअल मीन्स ऑनलाइन वीडियो वगैरह से आप इंटरेक्शन करते हैं, तो इट क्रिएट्स ए रेपो विद द पार्टिसिपेंट, डायरेक्ट हो जाता है. तो उससे क्या होता है, इट लीड्स टू मोर कैंडिड रिस्पॉन्सेज. और अगर आपको किसी सवाल के जवाब क्लियर नहीं मिले या डाउट है या कुछ और भी पूछना चाहते हो, तो वो आपको पूछने में आसानी हो जाती है, बिकॉज यू डेवलप ए रेपो विद द पार्टिसिपेंट. इन डेप्थ इंफॉर्मेशन. इन डेप्थ इंफॉर्मेशन क्या है? यूज फॉर एक्सप्लोरिंग कम्प्लेक्स टॉपिक्स इन डेप्थ. कम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, उनको इन डेप्थ स्टडी करने के लिए स्पेसिफिक पॉइंट पे जाकर स्टडी करना है, व्हाई, तो उसमें ये काम आती है. इट हेल्प्स इन गेनिंग इनसाइट्स इनटू पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव. पर्सनल एक्सपीरियंस का काम आता है, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में काम आता है. तो जब आप किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस के, किसी ने कोई पहले से रिसर्च कर रखी है, उसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो बहुत काम आता है. तो ऐसे सब में अगर वो सब्जेक्ट के कोई लोग हों जिन्होंने रिसर्च किया हुआ है, तो आपको बड़ा इंसाइट, इन डेप्थ नॉलेज मिल सकता है. प्रोब एंड क्लैरिफाई.
Interviews have flexibility to probe further, ask follow-up questions, and seek clarification when needed. Best है because of personal rapport, as I said, आप further question पूछ सकते हैं बातों से और उसको क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं. इट अलाउज रिचर डाटा को और रिच मतलब इन डेप्थ और अच्छा बना सकते हैं. स्टेप्स इन द इंटरव्यू मेथड में क्या स्टेप्स हैं? जो पहले 8 किए थे बिल्कुल उसी प्रकार मिलते जुलते फिर आ गए. अभी जो ऑब्जर्वेशन में किए थे, डिफाइनिंग द रिसर्च objective should be clear. Selection of participants, select participants who are relevant to the research objective. Consider factors like demographics, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, उस हिसाब से आप सिलेक्शन कीजिए. डेवलपमेंट ऑफ इंटरव्यू प्रोटोकॉल, उसमें क्वेश्चनर डेवलप किया था, इसमें इंटरव्यू कर रहे हैं आप. क्रिएट ए प्रोटोकॉल which is structured guide containing question topics or prompts. Protocol can be fully structured, semi or unstructured depending upon research design. किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं. पायलटिंग पहले भी किया था, अभी फिर कि आप पायलट टेस्ट कर लीजिए. आपका जो क्वेश्चन बनाए हैं आपने, इंटरव्यू प्रोटोकॉल जो बनाए हैं, ताकि उनमें कोई क्लैरिटी आ जाए और कहीं भी कोई वर्डिंग, स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं भी कोई वेगनेस है वो खत्म हो जाए. आफ्टर दैट यू कंडक्ट इंटरव्यूज में भी अगर याद रखिए, अगर आप किसी ट्रेनर को भेजते हो कि जाके इंटरव्यू करके आओ, तो ही शुड बी वेल ट्रेन्ड. देन यू कंडक्ट इंटरव्यू योरसेल्फ थ्रू योर फ्रेंड्स, ट्रेनर्स, कलीग्स एक्सेट्रा. देन डू व्हाट, डाटा कलेक्टिंग. पहले किया था डाटा कलेक्शन, इसमें डाटा रिकॉर्डिंग. क्योंकि ये इंटरव्यू मेथड है, इसमें आप जो भी डाटा है वो आप रिकॉर्ड कर लेते हो. इट इज क्रिटिकल फॉर एनालिसिस एंड वैलिडेशन. उसके बाद आप डाटा एनालिसिस करते हो, ट्रांसक्राइब एंड एनालाइज द इंटरव्यू डाटा टू आइडेंटिफाई रिकरिंग थीम्स, पैटर्न्स और फाइंडिंग. क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो इसमें, और आप उसका पैटर्न क्या है, थीम्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है, ये आप एनालाइज करते हो. एंड देन लास्ट इज इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग. जैसे ऑब्जर्वेशन में किया था, इंटरप्रेट द फाइंडिंग फ्रॉम द इंटरव्यूज एंड रिपोर्ट देम इन ए रिपोर्ट रिसर्च पेपर. रिसर्च पेपर छापते हो, उसमें आप रिपोर्ट कर देते हो. इंटरप्रिटेशन शुड रिलेट द डाटा टू द ऑब्जेक्टिव. याद रखें, किसी भी जगह हो इंटरप्रिटेशन, कहीं भी करो आप, इट शुड रिलेट टू द डाटा कलेक्टेड एंड थ्रू डाटा टू द मेन ऑब्जेक्टिव. इट शुड प्रोवाइड इंसाइट्स एंड कंक्लूजन. एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए कि आप उससे इन डेप्थ नॉलेज भी मिले, आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो, और उसको आप कंक्लूड करो. दैट इज कंप्लीटिंग द इंटरप्रिटेशन. इफ यू कांट कंक्लूड इट इन सर्टेन टर्म्स, तो आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा. देन इज टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज. लेट्स डू दैट आल्सो. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या होती हैं? Fixed set of standardized questions in a specific order. Fixed set of standardized question in a specific order. आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बनाते हो. बिकॉज अगर आप हैफाजर मैनर में पूछोगे तो वो क्वेश्चन लिंक नहीं होंगे. लिंक बनाए रखने के लिए एक क्वेश्चन, उसी से दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन निकलता रहना चाहिए, सो दैट दीज आर ऑल लिंक टू ईच अदर, स्पेसिफिक और क्लियर होने चाहिए. It ensures consistency and comparability across participants. कंपेयर करने में आसानी होगी और कंसिस्टेंसी में आपको डाटा सही मिलेगा. कॉमनली यूज्ड इन सर्विस में आम यूज होता है. सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेट ऑफ कोर क्वेश्चन इज आस्क्ड बट देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी टू आस्क फॉलो अप क्वेश्चन. कोर क्वेश्चन आपने 5, 7, 10 रखे हुए हैं, पूछते हो, और उसी से फिर निकल के आएंगे आपके फॉलो अप क्वेश्चन. तो दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. पार्टिसिपेंट्स कैन बी प्रोब्ड इन डिटेल. डेप्थ में जा सकते हो. These interviews strike a balance between structure and flexibility. स्ट्रक्चर्ड भी है, एट द सेम टाइम इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. कई ऐसे आइडियाज, थॉट्स जो आपने नहीं सोचे थे, वो इस तरह के इंटरव्यू से आ जाते हैं. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ओपन एंडेड एंड अलाउ फॉर फ्री डिस्कशन.
Open-ended. What are you thinking about this year's election? Who will win it? It is a very open-ended question. So उसके ऊपर free discussion भी हो सकता है, आप सवाल जवाब कर सकते हो. Interviewer might have a broad topic, but no predefined question. Broad topic आप लेके चलते हो, लेकिन predefined question इसमें नहीं होते हैं. That is totally unstructured. It makes it suitable for exploring complex nuanced subjects. complex subjects जहाँ होते हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन, एक मेन क्वेश्चन लेके चलें, उसको इन डेप्थ स्टडी करने में इसमें आसानी होती है. इन डेप्थ इंटरव्यूज, ऑफन वन ऑन वन इंटरव्यूज कंडक्टेड टू गेन इनसाइट्स इनटू इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस और एक्सपर्टीज. ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने फील्ड के, उनके साथ आप वन टू वन इंटरव्यू करते हो. इन डेप्थ एक सब्जेक्ट ले लिया, उसके ऊपर आप सारे सवाल पूछते रहते हो उसी से. इट इज थ्रू द वे ऑफ ए डिस्कशन अगेन, यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च. ग्रुप इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, स्मॉल ग्रुप्स लीजिए. सेवरल पार्टिसिपेंट्स आर देयर डिस्कसिंग ए टॉपिक अंडर द सुपरविजन ऑफ ए मॉडरेटर. आप 5-10 लोगों को बैठाइए, एक टॉपिक दे दीजिए, डिस्कशन करेंगे, उसको आप मॉडरेट करिए इस ढंग से कि आपके जो मन में क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस है, उनका आपको जवाब मिलता रहे. is useful for exploring group dynamics and collective opinions. Collective opinion क्या है, group dynamics के बारे में भी आपको पता चलता है. Questionnaire method of primary data collection, ये क्या है? Now, it is primary data collection technique, questionnaire method. इसमें क्या करते हैं? It involves using a set of structured questions, prompts or statements to collect information. Used set of structured questions. This is a questionnaire method. Can be administered in various formats like paper surveys, online surveys, email surveys, or interviews. What are the key aspects of this? एक second. Questionnaire method. Yeah. What are the key aspects of this are? Firstly, it is a structured format. Questionnaires are structured instruments containing a set of standardized questions and response options. Standardized question answer है और response option दी हुई है, multiple choice, single, double choice, or whatever it is. This method ensures consistency in data collection, obviously. Standardization is the second key characteristic. Questions are administered consistently to all participants. All participants are checked on this. What are we doing? Standardization. Okay. All participants are administered this questionnaire and to check their consistency. It helps in consistency of the data collection. Everyone is asked same question in the same way. You don't change the system of asking questions. Same question, same way, everyone is asked. That is standardization. Then is the scalability. What is scalability? Questionnaires can be administered to a large number of participants simultaneously, making them suitable for surveys with large sample. Large sample के साथ जब survey कर रहे हैं, it makes it suitable. A number of questions are asked and number of participants are there, but the questions are same. Self-administered or interviewer and administered can be self-administered by respondents, paper or online, or administered by an interviewer in person, phone, or video graphing. Then is the quantitative data. Questionnaires are typically used to collect quantitative data. When you get yes, no, etc., then you obviously give them the numbers 1, 2. If they all yes are 1, all no are 2, then you obviously get let's say 20 yes, 80 no. So you know there are 20 points for this and 160 for that. So accordingly you collect the data. So this is a quantitative data you get in a questionnaire form. Can also use open-ended questions for qualitative responses. जब आप क्वेश्चनर करते हो तो आप open-ended question भी पूछ सकते हो for
qualitative response. Otherwise, it is generally used for quantitative data collection. Next is steps in questionnaire method. Again, the 10 steps. How do you carry out questionnaire method analysis steps? We have done it in observation method. We have done it in interview also. Now we are doing it the same thing in a questionnaire method. Define the research objective. Should clearly define the objective. Second is questions development. You develop the question properly and no, second point is question, yes, development. Create a set of structured questions or prompts that align with the objective. जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है उसके मुताबिक क्वेश्चन होने चाहिए. इंटरव्यू में भी यही किया था और ऑब्जर्वेशन में भी यही किया था. Each question should be clear, concise and unambiguous. Third is questionnaire design. Questionnaire design should be pre-selected. Organize the question in a logical sequence. Include response options for closed-ended questions. Response options आने चाहिए closed-ended. Yes, no, very good, good, bad, very bad. When they're giving multiple choice options. So ये clear होना चाहिए. Consider the format. किस फॉर्मेट में ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस और लिक्विड स्केल और डाइकोटोमस इज ओनली यस नो टाइप. तो आप कौन सा स्केल यूज करना चाहते हैं ये पहले से पता होना चाहिए. आफ्टर क्वेश्चनर डिजाइन यू कम टू पायलटिंग. सो पायलटिंग टेस्ट करिए अपने क्वेश्चनर का ताकि उसमें कोई वेगनेस है, क्लैरिटी नहीं है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, किसी को स्पेसिफिक आंसर नहीं आ रहा, आप उसको क्लियर कर सकते हैं. Then you carry out selection of participants, clearly identify and select relevant participants. Ensure the sample is representative of the population. जो भी आप सैंपल लेते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो क्लियरली रिप्रेजेंटेटिव हो. पीपल जो आप डाटा लेना चाहते हैं, जिनको स्टडी कर रहे हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हो. Next is distribution. You distribute the questions to them. Administer the questionnaire to participants using the chosen method. In person, email, online और पोस्टल मेल, जो भी मेथड आप यूज करना चाहते हैं आप उसको यूज करके क्वेश्चन जो है वो पार्टिसिपेंट्स को दे सकते हैं. नेक्स्ट इज द डाटा कलेक्शन. देन यू कलेक्ट द डाटा from the participants. After the participant data collection is the distribution. Distribution is administer the question just 1 second. Selection. Data collection, yeah. Then is the data entry. You have to record the data properly in your computer. They're very, very important systematically, so that straightway you can put it to the software and get the details on that. For online survey, data is automatically captured. But if it is physical, you have sent the questionnaire via email or something, then you have to carry out the recording of the data properly. Then is the data analysis. Analyze the data to identify patterns, trends, and relationship. Statistical analysis for quantitative data. Content analysis for open-ended responses. Statistical analysis, there are various tools. They are available in the software of the computer. You can use them. And the last is interpretation and reporting. Interpret the findings from the questionnaire and present them in a report or paper. Interpretation should relate the data to the objective. It should provide insight and conclusion. Interpretation should be correct. It should relate to the objective and the hypothesis, and it should lead you to the conclusion, clear conclusion. If you can't do that, तो आपका data गलत हो जाए. So these steps we have done in observation method, we have done in questionnaire method, we have done it in interview method. They are almost same. Just systematically sit down and think. Your 3 questions are clear. Same steps in all. Then is the types of questions in the questionnaire. What are the types of questions in the questionnaire? First is the close-ended questions. What are close-ended questions? Choose from
Predefined response options. For example, multiple choice, Likert scale, yes, no, Likert scale, yes, no, dichotomous. These questions yield quantitative data. You number them. Open-ended questions provide free text responses. It allows for qualitative data. These questions provide more in-depth insight. These are time-consuming. You have to filter it. The person giving you the open-ended answer will give you so many vague things. You have to filter it out as to what is relevant to your topic and what is irrelevant to your topic. Dichotomous questions are typically yes, no. Select between two response questions. Likert scale questions, participants rate their agreement or disagreements on a scale. For example, from strongly agree to strongly disagree. Strongly agree, don't agree, strongly disagree. The 4-5 option आ जाती हैं. So what do you want? Next is multiple choice question. Participants select from a list of options. Ranking questions. Participants rank options in order of preference or importance. You rank the answers. You tell them, put it on a scale of 1 to 10. 1 is bad, 10 is very good. So then he says 1 scale, 2 scale, 10 scale, 9 scale. Semantic differential scale. What is semantic differential scale? Questions with a scale anchored by contrasting objectives like happy, unhappy. It is a rating scale used to measure the attitude and opinions of respondents towards an object, person, event, or an idea. So that is where you use semantic differential scale. Next is the schedule method in primary data collection. What is the schedule method? Through a structured interview conducted by an interviewer. तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन में शेड्यूल मेथड क्या है? Interview, basically. Structured interview. Predefined schedule is followed by the interviewer. Predefined schedule, predefined questions. Contains a set of standardized questions, prompts, and topics. We have done a standardized question. Often used in face-to-face or in-depth interviews. When you are carrying face-to-face interview with anyone or in-depth interview, generally you do with the experts in that particular field. So what are the key characteristics or method? Standardized, structured and standardized. What is structured and standardized? Schedule contains a predefined set of questions, prompts, or topics. Predefined. You have already made up your mind. These are the questions, and I just want the answer to this. All respondents are asked the same question. So wherever you go for this method to collect the data, all this the interviewer will ask the same questions from everyone. Face-to-face interaction, it allows direct interaction between the interviewer and the respondents, direct interaction between the two. It is often one-on-one setting. एक के साथ बैठिए फिर उठ के किसी और के पास फिर it is a time consuming. You have to travel to so many people to collect data, but it gives you really good insight of the topic. Depth and detail schedule method is suitable for in-depth data collection. It allows probing and follow-up questions to explore complex topics. Helps in follow-up question, collect complex topics के ऊपर and in-depth data मिलता है. Next practices is quantitative or qualitative. It can be both. You can schedule the questions to collect either qualitative open-ended questions or quantitative close-ended questions. Human interaction, well, it helps you key role. You develop a repo, and the help of that is that you want to ask more questions, go into more details, or follow-up questions, that helps in this. Follow-up questions. Steps in the schedule method. What are the steps in the schedule method? Again, same kind of steps you will find. Defining the search objective, it should be clear. Second is schedule development. You have to develop your own schedule.
like to make your own question, what you want to observe, what do you want to interview. Here is a schedule development. You create your own schedule, and that aligns with your objective. The questions, topics, prompts should be organized in a logical sequence. Next is piloting. Again, same thing. You carry out a pilot test to check the errors, etc., so that you can correct them. Then is a selection of participants. You select the correct participants who are true representative of the population you are going to study. Ensure that the sample is representative. Then is the conducting interviews. You conduct the scheduled interview, administer the schedule to participants in a one-to-one interview setting. Ask questions, note down answers, and encourage them to involve in discussions to get their perspective. Then is a probing and follow-up. You want to probe and follow-up questions you want to ask. Human angle is there. You have already developed a rapport by one-to-one interview. Ask them. It will give you richer data. Then you go for data recording. Whatever you get, qualitative and quantitative data, those responses should be recorded properly. Take note of each and every point. Take detailed notes to capture the data. Then you carry out data analysis. Then you carry out the analysis as per your tool you have already selected, design you have already made. Then, of course, after analysis, you carry out the interpretation and reporting. Interpret the data to lead you to the answer to your main objective, main question, hypothesis, and data should be analysis and interpretation should be complete in the sense that it leads you to the conclusion. Types of questions in a schedule method. Close-ended questions you can ask. Then you can ask choose from predefined response to options such as multiple choice or Likert scale. Multiple choice, as I said, strongly agree, don't agree, strongly disagree. Those are the multiple choice. A Likert scale, yes, no type. Open-ended questions, participants provide the free text responses allowing for qualitative data. You ask open-ended question and the answer can be in few lines. So longer one also. So there's an open-ended question. You leave it to the person to answer in his own way. So by this method, you get a lot of qualitative data, a lot of other data which you may not have thought of also. Probing questions, these are follow-up questions used to explore a topic in more depth. Probing questions you can ask to follow as follow-up. Once you ask the person some questions, you may find some more questions coming to your mind based on his answers. So it allows you for additional details. Prompt statements used to guide the conversation and encourage participants to share their thoughts or experiences. You make prompt statement. You prompt them to come out with their ideas, experiences, thoughts. So that is a prompt question. Secondary data collection methods. Now, secondary data collection methods are, it involves collecting data from existing resources already collected by some other people, not meant for your study. Some people have already collected it, not for your study, but his own study, but you can make out some data, take out some data from that study. That is a secondary data. You have books, government records, company records, any other pre-existing data, published books and all that. These are all secondary data. You are not here involved in one-to-one or with a group or experiment with anyone. The data is already existing. Somebody has already done the job. If you collect primary data from the original sources, then somebody else using your data for something will be known as secondary data for him. It can be a valuable source as it saves time and resources compared to collecting primary data. It just depends on you. You got to collect the data. You can collect the journals, magazines. You can go to the websites, books, etc. available. So it saves a lot of time rather than going to the people to collect data. While using secondary data, care must be taken for its reliability and validity of the data source. We don't know that data has been collected from what kind of source. So be careful if you are using secondary data for your research, that it is valid and reliable data
from the reliable sources also. Take note of any potential bias. If you find any bias can be there, please note it and try to remove it. Researchers must cite and acknowledge the authors of the secondary data. Please ensure that when you are writing your report, thesis, etc., from wherever you have collected the secondary data, those authors must be cited in the text as well as in the bibliography. How you cite it, we'll come to that later on. This ensures transparency and ethical research practices. If you cite them properly, it ensures transparency, clear from where the data has been collected, and ethical research approach. Ethical because you don't have to face the inquiries later on. Ethical means whosoever has done it, you give a credit to that person. So that is very, very important. Common secondary data collection methods are literature review. You read books, magazines, journals, etc. They are already available in the already existing pre-researched thesis. It helps to understand the topic, what has already been studied, gaps in literature, and then build upon existing knowledge. It helps them. Second is archival research, involves studying historical documents, records and materials in libraries, archives, or online database, helpful in historical or long time research projects. Archival research आपने बहुत बार पढ़ा होगा, when you अयोध्या में हुआ था, विज्ञान व्यापी में हो रहा है, कई जगह होता रहता है, खजुराहो में हुआ था, मोहनजादड़ो में हुआ था, वो खुदाई की तो पुरानी पता नहीं क्या क्या बर्तन मिट्टी के और क्या क्या निकलते हैं. सो दैट इज ऑल आर्कीवल, जो बहुत सैकड़ों साल पहले की चीजें हैं. तो आप उनसे भी जो रिकॉर्डेड है उनका, किसी ने रिसर्च किया और किसी कुछ मिला, जो रिकॉर्ड हो जाते हैं, उनसे भी आप आर्कीवल रिसर्च डाटा ले सकते हैं. Third is a government record. Government agencies often maintain a wealth of data on various topics, like census data, economic statistics, health records, like that. So you can take secondary data from these records also. These can be accessed through website or official publications. Company reports. Companies routinely produce financial reports, market research, and internal data that can be valuable for business and analysis. You can easily obtain them from websites, financial databases, regulatory authorities. The company reports, market research, etc., whatever they have done, their financial reports, etc., you can assess them and carry out research, use them for your research. Next is academic database. Many academic databases provide access to a wide range of scholarly articles, theses, and research papers that can be used for secondary data collection. Universities generally maintain these records of students who have already done research, their thesis, research papers, etc., are already there. So you can collect a lot of data from them also. Next is surveys and questionnaires. Surveys and questionnaires conducted by brothers researchers or organizations serve as secondary data. Surveys and questions which have already been conducted by some fellow friends or some researchers or some organization, they serve as a good secondary data. Many such surveys are available in the public domain, like General Social Survey or World Values Survey. They are already available in the social and the domain. Official publication, government and international organization often publish reports, statistics, research findings. World Health Organization publishes health-related data and reports. Similarly, IMF publishes a worldwide report that so-and-so country will grow like this, so-and-so country will decline, GDP will decline. All those official publications are there. They keep publishing it. News media, newspaper, magazines, and websites are good source of secondary data, particularly on current events, public opinion, and trends. Newspapers, magazines, website, these are daily available things and updated things every day. They are updated every day. So they are very good these are very good sources of secondary data. They provide information about public reactions to various issues. You read newspapers, magazines, journals, and websites, etc. You find the reaction of the people also, which is very good secondary data. Online data repositories
Some organizations host data repositories where researchers can access and download database on various topics. Various topics means a place, repository is a place or a container in which something is stored in large quantities. Can be centralized digital storage. These are the things where you can, which can help you in getting the secondary data. Like there is a website, data.government. It provides a range of government database in United States. Specialized database and repositories are available for specific fields. You want to go for met, environmental, financial, market, anything. So these are very helpful there. For example, NASA offers data sets related to space and earth sciences. So this is there. This is for the today only. So tomorrow we will go for data analysis and statistics. Thank you. Om Shanti. Shanti, could you send us a PPT of Unit 4? Yeah, I will send you